जो होगा जैसा होगा भाई, कर देना। Inside our Earth. The Earth, our homeland, is a dynamic planet. It is constantly undergoing changes inside and outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the Earth? What is the Earth made up of? Interior of the Earth. Interior of the Earth. Just like an onion, the Earth is made up of several concentric layers with one inside another. The uppermost layer over the Earth's surface is called the crust. It is the thinnest of all the layers. It is about 35 km on the continental masses and only 5 km on the ocean floors. The main mineral constituents of the continental mass are silica and alumina. Means aluminium ही होगा. It is thus called Sial. Si silica and Al alumina. The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. It is therefore called SiMa. Si for silica and Ma for magnesium. Just beneath the crust it is mantle, which extends up to a depth of 2900 km below the crust. फिर क्या बोल रहा? Do you know? The deepest mining in the world is in South Africa. It is about 4 km deep in search for oil. Engineers have dug a hole about 6 km deep to reach to the center of the earth, which is not possible. You will have to dig a hole 6,000 km deep on the ocean floor. The innermost layer is the core, which with a radius of about 3500 km, it is mainly made up of nickel and iron and is called Ni, Ni for nickel and Fe for ferrous, which is an iron. The central core has very high temperature and pressure. Do you know? The crust forms only 1% of the volume of the Earth. 84% consists of the mantle and 15% make the core. The radius of the Earth is 6,371 km. Rock and minerals. Yes. Rock और minerals क्या होता है? The Earth's crust is made up of various types of rocks. Any natural mass of mineral matter that makes up the Earth's crust is called a rock. Rock can be of different color, size, and texture. There are three major types of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. When the molten magma cools, it becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rocks. They are also called primary rocks. There are two types of igneous rocks: intrusive rocks and extrusive rocks. Can you imagine lava coming out from the volcanoes? Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. When the molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid.
Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. They have a very fine grained structure. For example, basalt, the Deccan Plateau is made up of basalt rocks. Sometimes the molten magma cools down deep inside the Earth's crust. Solid rocks so formed are called intrusive igneous rocks. Since they cool down slowly, they form large grains. Granite is an example of such a rock. Grinding stones used to pre- prepare paste. Powder of spices and grains are made up of granite. तो stone और spices or grain are made up of granite. Grinding stones used to prepare paste. अच्छा, वो जो हम लोग नीचे पत्थर घर में सिलौटी नहीं होता उसका बात कर रहा। स्पाइसेस और ग्रेन पाउडर बनाने और पेस्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं. Rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments. These small particles are called sediments. These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. These loose sediments are compressed and hardened to form layer of rocks. These type of rocks are called sedimentary rock. मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह हवा या पानी के वजह से ट्रांसपोर्ट होता है और वो एक जगह एक के ऊपर एक जो जमा होता है उसको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं. फॉर एग्जांपल सैंड स्टोन इज मेड फ्रॉम grains and sand. These rocks may also contain fossils of plants, animals, and other microorganisms that once lived on them. Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks used great heat and pressure. For example, clay changes into slate and limestone into marble. Rocks are very useful to us. The hard rocks are used for making roads, houses, and buildings. You use stones in many games. For example, seven stones, pitho, hope, scots, stepu, kit, five stones, gitti. Find out some more such games by asking your grandparents, parents, neighbors, etc. Collect picture of some moments and find out which are the rocks used to build them. कौन कौन से रॉक बनाने के लिए यूज हुए. Okay, the picture have been collected for you. Picture collect हुआ है. You will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain conditions in a cyclic manner. This process of transformation of the rock from one to another is known as the rock cycle. You have already learned when the molten magma cools, it solidifies to become igneous rock. These
igneous rocks are broken down into small pieces that are transported and deposited to form sedimentary rocks. When the igneous and sedimentary rock are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. The metamorphic rocks, which are still under great heat and pressure, melt down to form molten magma. This molten magma again can cool down and solidify into igneous rock. Rock are made up of different minerals. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. क्या बोल रहा है? अरे ब्रदर, मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड. मिनरल इंसानियत के लिए बहुत ज़रूरी है. सम आर यूज्ड एज फ्यूल. कुछ फ्यूल के लिए यूज़ होते हैं. फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम. दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्री. आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम etc. इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर्स etc. बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, जैसे कि आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम etc. और मेडिसिन के लिए भी यूज़ होते हैं और फर्टिलाइजर्स के लिए भी यूज़ होते हैं. व्हाट आर द मिनरल्स फाउंड इन योर स्टेट. तुम्हारे स्टेट में क्या क्या मिनरल फाउंड होता है. कलेक्ट सम सैम्पल टू शो इन योर क्लास. कुछ सैम्पल कलेक्ट करो, अपने क्लास में शो करो. चलो भाई, क्वेश्चन आंसर है. व्हाट आर द 3 लेयर ऑफ द अर्थ. अर्थ का 3 लेयर क्या था. पहला क्रस्ट, दूसरा मेटल, तीसरा कोर. व्हाट इज अ रॉक. रॉक क्या होता है. पत्थर होता है. नहीं पता भाई. 3 टाइप ऑफ रॉक हो गया तुम्हारा. एक सेडिमेंट्री रॉक हो गया था, एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक हो गया, एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक हो गया. नहीं भाई, 3 टाइप ऑफ रॉक हो गया. इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक. चलो ठीक है. हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक फॉर्म. कैसे कैसे होता है. रॉक का साइकिल कैसे होता है. सेडिमेंट्री का तो पता है, वो टूटने के बाद एक जगह पे जमा होता है विंड या पानी के थ्रू. फिर धीरे धीरे वो जमा होने के बाद सेडिमेंट्री रॉक कहलाता है. व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक. रॉक्स का बहुत सारा चीज़ यूज में होता है. फॉर एग्जांपल रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नाली वगैरह बन रहे हैं, और कला मूर्ति वगैरह में. और क्या हो गया दोस्त. पत्थर का उपयोग, मूर्ति हो गया, फ्लोर बनाने में बहुत सारे होते हैं. मार्बल टाइल्स ये बोलते हैं, मार्बल वगैरह होता है उसमें. फिर मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है. नहीं पता. द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टेन मैग्मा इज. कौन सा होता है, कौन सा इग्नियस होगा हमको पक्का. लेट्स सी. चलो ब्रो, इसको कंप्लीट हो ही गया है.